I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. Hi, welcome to Swethas vllogs. तो आज हम जा रहे हैं one of the famous roads in Bangalore, which is like very old as well as very important place of Bangalore. वो है MG Road, that is महात्मा गांधी रोड. तो हम जा रहे हैं महात्मा गांधी रोड. तो इस सिग्नल से नेक्स्ट सिग्नल तक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड राइड जो है, वन स्ट्रेच राइड दैट इज अमेजिंग. और उस अमेजिंग राइड में जो प्राइड है वो इट इज़ टोटली डिफरेंट. सभी बैंगलोरियंस को ये पता है क्योंकि ये सिग्नल जहाँ से स्टार्ट होता है और वो सिग्नल जहाँ पे एंड होता है एक ही स्ट्रेच है, नो स्टॉपिंग, नथिंग. सो इट इज़ लाइक वंडरफुल फीलिंग. तो वो एक्सपीरियंस करने का मज़ा जो है वो बैंगलोरियंस को ही पता है. और जो आउटसाइडर्स है, जो बाहर से आते हैं, यू शुड ऑल्सो एन्जॉय दिस राइड. तो MG रोड एक स्ट्रेच है, स्ट्रेच फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द सिग्नल टू द ट्रिनिटी सर्कल, एंड इफ यू गो फर्दर टिल 1 MG मॉल, the entire stretch is one road. But now they have put a signal lights in between like Trinity Circle में और उसके बाद like that. But anyways, this is the best ride I always enjoy. And yes, once we are here, और traffic तो होगा ही because this is one of the best road और famous road भी है. And this goes to one of the famous road, that is Brigade Road का अलग ही बात है. As you can see, if you go there, it is always flashy light and lit रोड है. ये भी एक फेमस रोड है. जो भी यहाँ पे आए बैंगलोर में, दे शुड नॉट मिस MG रोड एंड ब्रिगेड रोड. सो इफ यू मिस दिस देन यू हैव सीन नथिंग इन बैंगलोर. As you can see, it's a shiny bright evening and हम घूम रहे हैं चर्च स्ट्रीट पे because after parking we have to search for the parking here. Actually yes, you have to. So उसके बाद खाने के लिए कुछ ले रहे हैं हम, and as you can see, yummy delicious food मिलता है यहाँ पे. We have taken choco donut and mango tart. तो पूरा चर्च स्ट्रीट में आपको खाने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए पूरा आपको मिल जाएगा प्लेसेस. एंड हाउ ब्राइट एंड सनी दिस इज. एंड यहाँ पे है RCB का कैफे. समडे आई विल गो देयर एंड आई विल डू अ व्लॉग फॉर यू. एंड वी आर जस्ट पार्क्ड अवर व्हीकल. एंड यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है. आइदर यू हैव टू पे एंड पार्क, और इफ यू गेट दैट ऑल्सो, that is very lucky. So हम जा रहे हैं चर्च स्ट्रीट से towards MG रोड. So as you can see, so this is one of the vintage building. I have seen barista cafe से बहुत सारे cafes, and as of now it has become a pub. So this is the signal we started first riding over from here. So this is where the MG road starts. So this is amazing feel when you walk in MG road. So सभी बैंगलोरियंस को पता है MG road होता क्या है and how it feels. And then also if you are old Bangalorean, जब से आपने देखा हुआ है, it is very old, then you will know how nostalgic it will be to walk around here. तो यहाँ पे आजकल बहुत सारे अच्छे पब्स और आउटलेट्स आ चुके हैं. बट आई रियली लाइक द ओल्ड बैंगलोर वेयर द अदर साइड यूज्ड टू बी गार्डन, और वहाँ पे वॉक थ्रूज थे, वॉक लाइन्स थे. सो दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. एंड स्टेज थे, स्टेप्स थे जहाँ पे हम बैठ सकते थे. Obviously changes will happen because metro came, so they had to demolish all that, but still there is few left that side. Park abhi bhi hai, but I miss that steps. And yes, we could sit there and see
But anyways, these buildings are still there which we used to come here जब हम कॉलेज में थे तो हम दोस्त लोग यहाँ पे डेली वॉक करने के लिए आते थे and it used to be amazing because that time we didn't had a lot of malls, so this was like very famous road. So this Sony center was always there and वहाँ पे कैमरा हो लगा हुआ होता था like CCTV के जैसे which used to record all the people passing by. So we used to feel very proud seeing ourselves on the screen. तो यहाँ पे बहुत सारे आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो. As you can see, if you really know to bargain, these street shops have very good outfits to buy. But sometimes they'll give discounts and sometimes they won't. If they know that you are a localite, then they'll know that okay, they know the rates and all that. But if you look like a outsider, then they will charge more. So you should know how to bargain. So this is one of the places we'll usually try to buy few new stuff. So यहाँ पे है बिनी मिल्स लिमिटेड. So this is also one of the oldest building. तो यहाँ पे बहुत सारे mixture of old and new buildings बन चुके हैं अभी. If not, it was like very vintage and old. जब ब्रिटिश इंडिया था तब का सब था यहाँ पे. But now Joy cars and all, they have taken over and they have very huge showrooms. I really like the Shangri-Las here. As you can see, it's like very nice and very beautiful. And this side you can see metro और garden भी है वहाँ पे. But yes, we miss that the old walkway जो था वो वाला. But anyways, something is not changes this side much because those buildings which we used to see as now also we can see in the metro they have changed a few bit, but still this side it is as usual. और ये एक बिल्डिंग है जो अभी तक नहीं चेंज हुआ है. यहाँ पे है लेक व्यू आइसक्रीम पार्लर which this building is like विंटेज. यहाँ पे बहुत सारे रिस्टोरेशन वर्क होता रहता है बिकॉज इट इज़ अ ओल्ड बिल्डिंग, बट स्टिल दे हैव मेंटेन द सेम विंटेज लुक विच आई रियली लाइक. और बहुत ही अच्छा फील होता है जब वी कम हियर. एंड ऑब्वियसली 1 or 2 तो मैं क्लिक कर ही लेती हूँ पिक्चर यहाँ पे. एंड यस, आई रियली लाइक दिस बिल्डिंग. तो यहाँ पे पार्किंग के लिए पे एंड पार्क करना पड़ता है एंड देयर हैव लॉट ऑफ थिंग्स to do here to park. So I usually prefer not to park here and go inside and find some parking there. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे आती हूँ क्योंकि नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ क्योंकि मी एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू कम हियर एवरी डे एज आई सेड. और यहाँ पे एक होता था कि यहाँ पे एक सॉफ्टी आइसक्रीम मिलता था. सो सॉफ्टी आइसक्रीम का ये एक स्पेशलिटी था कि ही यूज्ड टू गिव buy 2 get 1 free, and we were 3 friends, so we daily used to buy 2 and when 1 used to be free. But उसमें दो एक ही फ्लेवर का होता था और एक जो फ्री मिलता था वो दूसरे फ्लेवर का होता था. So what we used to do all the 6 days, we used to shuffle ourselves to get that one particular special ice cream. So that was very nice. Brigade Road में भी मिलता था और MG Road में भी मिलता था, and we used to take that and slowly eat and walk here. और देखते थे जो लड़के लाइन देते होते थे या they used to stare on us, और जो कपल्स वहाँ पे they used to walk, we used to comment on them कि देखो वो कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसी है वो ऐसी है and all that. So it was really fun back then. And अब जब मैं वहाँ पे जाती हूँ I remember all the stuff we used to do and enjoy and remember and giggle to myself how amazing we used to spend our days here. So this is one more building which is still similar what it was, that is Barton Center.
सो यहाँ पे जो कैफ़ेज़ है वो चेंज होते रहते हैं, बट बिल्डिंग तो वही है एंड आई रियली लाइक दिस बिकॉज इट हैज़ नॉट चेंज। और इसका एक और स्पेशलिटी ये है कि इट स्टार्ट्स इन द एमजी रोड एंड इसका बैक गेट जो है वो है चर्च स्ट्रीट पे। सो दिस इज़ रियली नाइस बिल्डिंग। और एक्चुअली बहुत सारे टाइम एमजी रोड से पार्क होके एक्चुअली चर्च स्ट्रीट से बाहर निकलते थे। एंड दे हैव 13th floor pub here which is also very good, and Ebony restaurant. Someday if I go I'll do vlog for you. Both are really nice places to visit. और यहाँ पे ढेर सारे आपको स्ट्रीट शॉपिंग मिल जाते हैं करने के लिए। एंड टू लुक एट देयर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, outlets, new and old, which are there. Some are very like shut down and all in a ruined condition, which I don't like. But I don't know what is the problem कि वो कुछ I don't know, they have some litigation or something, so it is not in proper conditions. But what to do, there is always that. और यहाँ पे बहुत सारे नए शॉप्स भी आ चुके हैं एंड दैट इज़ आवर मेट्रो, न्यू मेट्रो, एमजी रोड का मेट्रो. इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड, देयर इज़ अ बिग एलिफेंट केप्ट ओवर देयर. एंड यस, यहाँ पे एंटीक शॉप्स भी है विच इज़ वेरी फेमस. और दिस इज़ वन बिल्डिंग विच हैज़ नॉट चेंज्ड, that is Prajavani. This is a newspaper office which has never changed from the day I am seeing, which is really good and I really admire this, and still the paper is running, so it is a historical place as well. So ये है metro, as you can see that side is the metro. And if you have come in metro, either you can get down in MG Road or MG Road के स्टेशन में उतर के you can go directly to the Church Street. और यहाँ पे आपको ढेर सारे फैंसी कार्स देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी राइट नाउ. एंड एक्चुअली जब when there was no malls and all, so this street used to be hot spot for everything. Guys and girls used to come here to roam around, and lot of people used to bring their fancy cars and park here. So daily, not daily, weekends में usually देखने को मिलता था. All used to park their fancy cars, and all the guys, when they see these fancy cars, they'll click, as my son is doing right now. So it is like show off thing kind of thing people used to do, and now also they do, I think so. And yes, it is, but less comparative to that time, because that time there was no malls. तो सभी अच्छे से ड्रेस होके एमजी रोड में, ब्रिगेड रोड में आके शॉर्ट ड्रेस पहन के they used to flaunt themselves. So now that has reduced, I think, a bit, but nowadays all malls have come up, so crowd is less compared to what we used to see on the roads. और ये है मेट्रो स्टेशन, एंड as you can see it is very very good. तो यहाँ पे ढेर सारे शॉप्स भी होते थे रोड के ऊपर, as you can say रोड शॉप्स थे, जो स्ट्रीट शॉप्स जो थे बहुत सारे, ढेर सारे थे. Now they have reduced it, and it used to create lot of problems for walkers as well as for parking, so they have removed lot of shops here. So street shops ज़्यादा नहीं दिखते, but they are there few. So इसके साथ ही if you go on the side, you can see lot of shopping buildings, like very very famous मान्यवर या कोई भी ब्रांड ले लो आप, यहाँ पे हैं. एंड वेरी वेरी फेमस विजय लक्ष्मी सिल्क्स भी यहीं पे है, एंड P.N. Rao, which is very famous for customized suits. Or you can see the lanterns, which are paper one, that is also available on streets sometimes. I have seen on those lanterns here only all the time. और बहुत सारे मलाबार गोल्ड वो सब यहाँ पे आ चुके हैं, एंड इट लुक्स रियली फैब. And you can want to do
वेडिंग शॉपिंग यहाँ पे आ सकते हो. एंड दिस रोड गोज टू ब्रिगेड रोड. एज सेड earlier, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस रोड. अगर आप वहाँ पे नहीं जाओगे एंड इफ़ यू क्रॉस देन यू विल सी the continuation of the MG Road. So यहाँ पे एक और vintage shop है which is artifact shop, which is like very very famous and it has lot of collections, good collections you can say. Sometime if I go I'll make a vlog of that also. So many things are there to do vlogs, but it's like really tough to record everything and put it on, but I'll try to do it. तो यहाँ पे ह्यूमन साइज का स्कल्पचर्स भी वो होते हैं. एज यू कैन सी इट इज़ लाइक अमेजिंग स्कल्पचर्स. और बहुत सालों से ये है शॉप. एंड यस, फर्दर इफ यू गो यू विल सी लॉट ऑफ शॉपिंग and complexes here. So it goes on. MG Road तो कभी ख़त्म नहीं होता. It looks really fab things to see around. थोड़े बहुत तो ओल्ड स्टाइल का जो है वैसे ही कंटिन्यू किया गया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम they have changed. And every time I walk here I always remember and go back to my old things. And this is one of the famous building यहाँ पे, that is unity building. So इसका क्या है कि this building was the tallest building before, because there was no tallest building like this that was 25 floors. And nowadays so they have built many, but उस ज़माने में एक ही था ये, and it was very famous that time. And me and my friend, we had gone up and stairs से नीचे आए थे. And you can see a lot of shopping things here to do. And खाने के लिए भी रोड साइड स्ट्रीट फूड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, which I had not tried this. I don't know what name it is. और मैंने ये खाना था और बहुत सालों से मैं देख रही थी बट खाया नहीं था. So my son suggested it is quite a thing to try. You will feel somewhat to eat this. It is like different taste. It's a nil taste, but you will feel different taste in that. So yes, it is nice. And if you are anime or artifacts ka shauqeen, then you can come here. So every Saturday and Sunday they'll put stalls there. So from there we are here in Wow Momos, because every time we come there will be something we will be doing and we'll get hungry. So बीच में खाना तो पड़ता ही है. And there is one more shop called Toto Pizzas, which is very famous in Brigade Road, which is near Fifth Avenue Mall complex. तो यहाँ पे भी आप without miss जाओ. It is one of the best pizza makers and pasta or fry makers I have ever tasted. They give loaded fries and pizzas, which is like delicious. Or if you have not tried, try karo. And never miss this. We never miss this whenever we visit MG Road or Brigades. So it's really tasty. And as I was telling, this public unity building जो है, इसमें हम गए थे ऊपर तक, because the lift was there, and that lift man didn't told us that lift is not working properly. So we thought there was a restaurant on 25th floor, and we went there, and the restaurant was shut down. And from 24th floor we have come down, both of us, in the stairs. और जब हमने कदम रखा 24 floor से आके, it was shaking like hell. So someone has done really nice painting in this building. So it used to be one of the famous hangout places before Canopy करके. So there is a small lift there which has light, and this is spray paint someone has done, graphite. And yes, this goes to next signal light. So if you continue, you'll go to Trinity Circle. So yes, I really enjoyed coming to MG Road and getting nostalgic and telling all this to my kids that हमने ये किया था, हमने वो किया था. And I don't know how much they understand, but
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आई शेयर माई मेमोरीज एंड आई गो टू दैट फेज एंड कम बैक. It really feels good when you have so much memory in your mind and when you visit that place and still you'll find some places still exactly the same way it was. But anyways, it's like MG Road, the MG Road ही है, and no matter you will see lot of fancy cars today also, and the same old josh of visiting the MG Road will be always there. And if you have not visited, please visit on this weekend because you will really enjoy being there. Every Bangalorean would have visited this and keep visiting that again and again. I thoroughly enjoyed this day, and thanks for watching, guys.